A very good morning, ladies and gentlemen, our esteemed neurologists, people with Parkinson's and their families, donors, volunteers, and all our well-wishers. On behalf of the Parkinson's Disease and Movement Disorder Society, I welcome one and all to our grand virtual celebration of World Parkinson's Day 2022. The last 2 years of pandemic were really challenging, but somehow we stayed connected and truly lived the motto of PDMDS. That is, together we move better. What really helped all of us in these challenging times was hope. Today, we are here to celebrate life itself and the immense hope we have witnessed in the lives of people with Parkinson's and their families. The theme for today's celebration is celebrating life, igniting hope. It is an honor for me to now invite our founder, Padma Shri Dr. B.S. Singhal, who has been a source of inspiration and hope to commence today's celebration. Thank you, Tejali. Thank you, Tejali. I think you have put it very, very correctly that during the pandemic years as well, that you have managed to interact with our patients with Parkinson's disease and also celebrate their life. And we continue, PDMDS puts in all the efforts to support and celebrate the lives of patients with Parkinson's disease. And also there is a hope because advances continue to happen, and I'm quite sure there will be newer advances, newer drugs, which will bring in a lot of hope for persons with Parkinson's disease. It's indeed a great pleasure for me to welcome you all and a very, very good morning. And I think we'll start the celebration soon. Thank you, Tejali. Tejali, now I think we should invite our chairperson, Dr. Kathpal. Dr. Kathpal, as you know, is our chairperson, a source of inspiration based in Indore. He is a very prominent neurologist. He has set up a very, very good support centers in Indore. And of course, he's guiding us for all of our centers, spread 65 support centers in 25 states. He's a great person, and the whole family of Kathpal is involved in our effort for persons with Parkinson's disease. And I think we have a wonderful message from Professor Kathpal from Indore. May I have the message from him, please? Respected Dr. B.S. Singhal, Dr. Maria Barreto, members of our Parkinson's group, and senior doctors of the society, Dr. S.M. Katrak, Dr. Jimmy Lalkaka, Dr. Charu Lata, Dr. Petrus of Wadia, and our friends from Neuro Rehabilitation Department. I am very glad to be speaking with you people. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग आपके सामने रूबरू नहीं हो पाए। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि आप लोगों को देख के ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ मोटिवेट करने आते हैं, उल्टा आप सब लोगों का उत्साह देख के हम ही मोटिवेट होके जाते हैं। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की कर्मण शक्ति, ये सारी चीज़ें देख देख के मन खुश होता है और उत्साहित होता है। और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि ये तकलीफ आने पे इंसान कोई डिप्रेस महसूस करे या अलग अपने आप को महसूस करे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप यही देख लीजिए कि अभी 2 साल से जो ये महामारी चल रही है देश में, जिसके कारण अपना मिलना कम हुआ, जिसके कारण अपने प्रोग्राम्स थोड़े से कम हुए। आपको मालूम है कि ये सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें, इसीलिए इस पार्किंसन सोसाइटी का गठन डॉक्टर B.S. सिंघल ने करा था। और ये गतिविधियां आज तक भी सुचारू रूप से चल रही हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में चल रही हैं, देश भर में चल रही हैं। इस कोविड काल में भी वीडियो सेशंस द्वारा पूरे देश के सभी सेंटरों में ये गतिविधियां चलती रही हैं, जिससे आप सबका भी मनोबल बना रहा है, आप सब भी काम करते रहे हैं और हम लोगों को भी उसके कारण खुशी की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आज वो समय आ गया है, जैसा कि मैंने पिछली कुछ बारों में भी आपको हमेशा कहा है कि आज सक्सेसफुल ऑपरेशन इस बीमारी के लिए होने लगे हैं और मरीज काफ़ी हद तक इन चीज़ों से ठीक हो जाते हैं। नई दवाइयाँ तो हैं ही, लेकिन विज्ञान प्रगतिशील है और अपने को आगे बढ़ते जाना है। और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि किसी न किसी दिन इस बीमारी का पूरा समाधान भी आपके सामने होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 गोलियां ही खाना है, अभी भी और कई एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा इस बीमारी में मदद मिलती है। मैं 2 चीज़ों का आपको ज़रूर जिक्र करना पसंद करूंगा, जैसे म्यूजिक थेरेपी और डांस थेरेपी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया कि भैया गाना सुन लो तो आपको अच्छा लगेगा, पर नहीं, इसके साइंटिफिक बेसिस हैं। आजकल रिसर्च के एक नहीं सैकड़ों पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें रिसर्च ने यह बताया है कि कैसे म्यूजिक थेरेपी और डांस थेरेपी इन पेशेंट्स की काफ़ी हद तक मदद करती है। म्यूजिक थेरेपी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी चाल को सुधारने में, आपकी गति को सुधारने में, आपके ट्रेमर्स ठीक करने में उनमें मदद करती हो, बल्कि आपकी बुद्धि शक्ति के विकास के लिए उसमें भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी हद तक मदद करती है। ऐसे ही डांस थेरेपी भी पार्किंसंस की जो जटिल प्रक्रियाएं रहती हैं उनमें काफ़ी मदद करने का उनका काम रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ बनाए रखिए। आप लोगों को जो हमने देखा है, जिस सेंटर में देखा है, आप लोगों का मनोबल बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर कि आगे जाके ये बीमारी आपकी ठीक भी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस सीइंग यू एंड होप टू सी यू नेक्स्ट ईयर इन पर्सन। थैंक यू। Thank you, Dr. Katpal. डॉक्टर कतपाल ने बहुत अच्छी तरह से अपने को समझाया है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हाँ PDMDS किस तरह से आगे आप लोगों की मदद करती रही है और अपने और आविष्कारों में और नई नई चीज़ें निकलेंगी किस तरह से पार्किंसन पेशेंट को लाभ देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कतपाल। तेजाली। Thank you, Dr. Singhal and Dr. Katpal. Now let's move on to the next part of our event. Hope is being able to see that there is light despite all the darkness, and it can help us get through the darkest of times. Dr. Singhal has ignited the flame of hope in all of us, the people with Parkinson's and their loved ones. A single candle can light 1,000 other candles and still remain lit. He is our ray of hope. असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you, Dr. Singhal, for lighting up our lives. We will now share with you an inspiring journey of a legend of our times, our founder, Padma Shri Dr. B.S. Singhal, through a conversation with our CEO, Dr. Maria Barreto, and our co-founder, renowned neurologist, Dr. Jimmy Lal Kaka. In keeping with the theme of today, celebrating life, igniting hope, Dr. Jimmy and I are honored
to share a few glimpses of the life and work of the founder of the PDMDS, Padma Shri Dr. B.S. Singhal, who has ignited hope in the lives of people with Parkinson's and their families. So may we request Professor Singhal to please come. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. That's such a pleasure. Yes. So, Dr. Singhal, let's start this conversation with sharing your most significant happy moments in the early years at Mount Abu. Well, as you know, I was born in Mount Abu. Yeah. It's a small hill station. The population was only 4,500. Everybody knew everybody. The school that I went to was the municipal high school, Walter High School. And luckily, this was very close to the Adams Memorial Hospital. Yes. These were very memorable days, and that I think inspired me into becoming a doctor, take up medicine. Excellent. There are three options: engineering, Indian Administrative Service, or medicine. But I think And proximity. thank God for all of us that Yes. you chose the right one. Yeah. So now this transition from this lovely idyllic Mount Abu to the iconic Grant Medical College, I think you also had some wonderful days there. I think those were again very, very memorable days. And before I came to Grant Medical College, I did the pre-medical in the beautiful city of Jaipur. Yes. They were also remarkable days. And came to Grant Medical College. And I was really fell in love with Bombay. And I did my undergraduate and even the postgraduate from the Grant Medical College. When, with their introduction, I went to England. So, what was the transition moving from India to England Well, I think, at that time? Coming from Mount Abu to the big city, of course, was in itself a big Big, challenge. big issue itself, yes. Then going from, I think it broadens your horizon. So, Doctor, over the years, you have worked with so many national, international organizations for various neurological conditions. Dr. Oscar Goshanik, a very good friend of yours, he has sent a message from the Movement Disorder Society, which we'd like to play for you. Dear Bim, it is an honor and a pleasure to send you a few words of salutation and praise for being awarded the Padma Shri by the Government of India. This is a well-deserved award for your many contributions to the field of Parkinson's disease and movement disorders. Your participation in international efforts, such as the WHO Working Group on Parkinson's disease, and your many activities within the International Parkinson and Movement Disorders Society are just a small part of your prolonged and distinguished career. I have always admired in you your modesty and calm demeanor that are qualities of all great men. My heartfelt congratulations from Buenos Aires, Argentina. Thank you, Oscar. You have been a great friend. It's been a great pleasure working with you and the other colleagues in the working group on Parkinson's disease. And I think we also shared a platform in the World program in Sydney, where I think you and I had a session for the patients and caregivers about the treatment of Parkinson's disease in the early stages and late stages. Thank you, Oscar. ये डॉक्टर प्रसिद्ध डॉक्टर रूमराज विदायसरी, उनका भी एक मैसेज है. डॉक्टर विदायसरी पास्ट चेयरमैन है ऑफ द एशियन एंड ओशियनियन एसोसिएशन ऑफ द मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी, एंड डॉक्टर सिंघल भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बहुत सारा उनका कंट्रीब्यूशन है, एंड उनका थ्रू हिज कंट्रीब्यूशंस दिस सोसाइटी आल्सो हैज progressed a lot. Hello, and I'm Rungraj PDS from Thailand, a past chair of the Asian Oceanian section of the International Parkinson's and Movement Disorder Society that we all know as MDS-OS. First of all, I'm so delighted to hear the good news about Dr. Bim Singhal,
on this prestigious Padma Shri Award given by the Government of India, and I would like to personally and virtually congratulate him on this occasion. As part of the Asian community myself, I'm particularly pleased that the government of a large nation like India recognizes the impact of Parkinson's disease within their country. Commending Dr. Singho on his journey of endless contribution to Parkinson's disease communities, of which his contribution is not limited to his homeland, where Parkinson's Disease and Movement Disorder Society of India has now grown to serve several outreach centers across the country. Learning from him, and what I could possibly say, indirectly being mentored by him on his great clinical and organization skills. While the success of ALPMC nowadays is a journey of contributions of distinguished clinicians across the region, I would like to take the opportunity to recognize him on his contribution and to thank him for his early leadership within the ALS, pulling all the strength and major contributors to put our ALS in the global map in movement disorders, and also led the early success of ALPMC that has now become a tradition of our regional movement disorder congress that we all look forward to. And of course, next year shall be in Kolkata, India. Congratulations, Dr. Singho, once again for this prestigious Padma Shri Award, and I hope to have a chance to meet you in person again very soon. Thank you very much, Dr. Rungraj. It's very kind of you. You have been very, very helpful to me. Thank you, Rungraj. Okay, so now, Doctor, we move to the PDMDS. What was your vision when you founded the PDMDS? Well, you know, I think, as you know, I'm a neurologist. Care of the patients and see the patients. But I realized that, you know, your individual patient is one thing, but doing something for the community is important. And this happened actually when I joined the working group on Parkinson's disease and Movement Disorder Society. There was a working group in which there were people from different countries, and I was selected from India by Mary Baker. And in 2003, we had a international symposium on Parkinson's disease and Movement Disorder Society. Really managed to invite nearly 40 international people to address the doctors about the Parkinson's disease and movement disorders, and simultaneously also address at the patient group as well. And this was the first time ever that the global declaration was, put up. This really has given me a lot of satisfaction. And I think the people feel quite happy about it. Yes. So that was the motivation. Yeah, yes. And in fact, Mary Baker, who was instrumental in organizing it and working with you to launch the Global Declaration, has sent you a message on this occasion. So we'll just play that. Hello, Beam. I want to congratulate you on this very prestigious award you've had from your government. What an honour, and how well deserved. When I look back to those days when we worked together, it was nothing but pleasure. Pleasure and admiration of all the work you were doing in your own country and the numbers that you had to cope with. You were absolutely marvellous. I loved every minute of it. And of course, that one outstanding day when we launched the declaration in Mumbai at the Taj Mahal. What a wonderful day. Colourful, spectacular, Miss World there. Unforgettable. Congratulations, Beam. And my love to you and your family. Thank you. It was a great pleasure for me. And I think it was your inspiration that made me begin the society in India. Thank you, Mary. The another highlight of the symposium was that Urvashi came in our fold. And Urvashi has been a great contributor in many ways. But the most important thing that she did was to give me Maria. And Maria, till then we were really struggling. Absolutely. But after Maria came, and with her dedication,
and bringing in the team of the people who are with her, I think society has made rapid strides. Vision is to expand it further. Thank you, Doctor. Thank you, Maria. Thank you. Thank you. So, many NGOs have been founded for numerous causes, but very few are blessed with the active involvement of their founder Yes. in the day-to-day running of the organization, ensuring that the programs, activities meet the needs of the people. What are your thoughts on the expansion of the PDMDS? I think we got to bring the awareness and also multidisciplinary, all the activities that we do, not only in the urban areas, but also in the rural areas, and especially in the lower socio-economic group who do not have the access. And I hope that with all what you people are doing in your team, Maria, I think I'm quite sure that we'll reach this goal, because already I can see that you're expanding into towns and villages. So actually, to many of us, Dr. Singhal is the renowned neurologist. We meet him and we have interacted with him. He has mentored so many of us, including me. And we listen to him delivering lectures and watching and receiving numerous awards. And we are all so proud. I think we are more proud of him receiving awards than he himself. We at the PDMDS were fortunate to experience so many different facets. With Unity Walks, the Sports Carnival, you've joined us at so many public forums, and the Mumbai Marathon to raise awareness about Parkinson's. So what was your experience walking the streets of Mumbai at that marathon? And will you be joining us for the next marathon? Once I joined the senior citizens thing and I was alone. I didn't enjoy it. But subsequently I joined the group, what is it called? The Dream Run. The Dream Run. Because you're young at heart. I think all of you together, I think it's been a great joy to increase the awareness, go around meeting the people, and all get together. I think it's really I enjoy, and I'm sure I'm looking forward to it. Sooner the January comes, the better. Yes. And one particular event that I, recollect, the fundraiser, Shake It Up for Parkinson's Disease. And lo and behold, he was the star walking the ramp. Well, I think the fundraisers have been important because we have to raise funds, to run the organization. But the thing, which pleased me most was that you also had the Parkinson's group patients dance on the stage. So I think it was really a very exhilarating moment. And I decided, I think I had to thank Cheryl for having arranged that. Yes, it was very memorable. Very memorable. Yes. And in fact, every World Parkinson's Day celebration is huge, and every year you always get celebrities gracing this occasion and appreciating the work of the society and the lives of people with Parkinson's. Indeed. What were your thoughts at these celebrations? Well, I think, one, of course, getting all the people together and celebrating the wonderful day of the World Parkinson's Day, where celebrations are being held all over. But these patients coming over and the organization that you had and the whole performances on the stage are very exhilarating and very, very enjoyable. And I think, even the all get together in the end, I think even through some of the themes, you passed on the message about the feelings of the patient with Parkinson's disease, how they feel, how they walk, what can be done for them. And I think it gives them a great excitement and pleasure in coming together on the stage. And here I'd like to thank Mr. Shamak Davar,
was very kind to perform these fundraisers for us. So I did ask quite a few members of our society what do they remember most about World Parkinson's Day. And all of them almost equivocally said when Dr. Singhal joined us on the stage Yes. for our final celebrity dance. Well, I think in the world performances, when everybody comes on the stage and dances, really, when I join them, it really is a moment of great pleasure for me, extreme pleasure for me. And I think the way they are dancing and performing, I could never think that they could walk, but they were dancing and performing. So I feel dance and music also do a lot of good for the patient with Parkinson's disease. So I think for me, it was a moment of great joy. Over the years, you have really inspired the PDMDS team, something that is ingrained in each and every member of the PDMDS. And I know for a fact that when we used to have our Thursday meetings at your clinic, that was, you mentioned that was the best time of the day or the week where you would look forward to meeting everyone. So, and I know that you treat them as absolutely your family. So would you like to, send a little message to them or tell them about the, Maria and her full PDMDS team? Well, as you know, Jimmy, the whole team is my family. Yes. My extended family. Yes. And I love them. And I like their dedication, their hard work, and the way they've done. And I think the way that they have, in fact, I feel that Padma Shri that you mentioned is all, I'm your representative getting the award. Frankly, but for the work that you people have done, I would not have mattered. So I think it's really, for me, that Thursday is, as you rightly said, is a special day for me. I look forward to it. And I think I also, whenever I attend any function of the Parkinson's Disease Society, and I see all the team members, it really gives me a great pleasure. And perhaps responsible for extending my life. Thank you, Doctor. Wonderful. I think that's something that wherever they are, we have expanded beyond Mumbai, all over the country, and today your team is all over the world. Yes. I think Maria has represented us in Melbourne, Singapore, Glasgow, and now she's a co-partner or the co-organizer for the World Parkinson's. I think it's a great thing that she has achieved for us. And the way our Parkinson's Disease and Movement Disorder Society have been recognized the world over. Yes, yes. In fact, one is the international recognition. The other is that we have 64 centers across the country, and we have physical support groups in 13 of these states. But post-pandemic, we have now been able to reach people with Parkinson's across our country. And I think they really appreciated the service. They recognize that there is life with Parkinson's. I think that's the most important thing that we've taught them. We've also now been asked to replicate the PDMDS model of care in Kenya. And this is through the efforts of the World Parkinson's Coalition and the Edmund Safra Foundation. So over the years, Doctor, we've been able to impact the lives of over 50,000 people with Parkinson's. And we've raised awareness. Another objective that you had when you initiated or founded this organization was to raise awareness about Parkinson's in our country. And we've been able to do that through various programs, activities, and reached out to over 7 lakh individuals through this initiative. I think being a neurologist and treating patients with Parkinson's disease, मैं उनके लिए दवाई लिखता हूँ, डोपामीन को रिप्लेस करने वाली दवाई लिखता हूँ, सपोर्टिव मेडिसिन लिखता हूँ, लेकिन कभी भी वो लोग संतुष्ट नहीं हुए। वो कहते हैं हाँ ये दवाई काम कर रही है, जब दवाई लेता हूँ तो मैं ठीक होता हूँ, फिर भी अभाव है, कुछ है नहीं। लेकिन जब मैं आप लोगों की सोसाइटी के अंदर आके मिलता हूँ औरों को, मैं जानता हूँ कि दूसरे लोग भी सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत होती है और हम सबों का डिप्रेशन कम हो जाता है। एंड जिस दिन पार्किंसन डिजीज सोसाइटी मीटिंग होती है
उस दिन का मैं इंतज़ार करता हूँ. So that actually gives me a lot of satisfaction how the society is functioning and the objective is being fulfilled. तो इसलिए मैं अपनी family, extended family, Maria and her team and my colleagues like Dr. Jimmy Lal Kaka, Petros Wadia, Charu Sakla, Kalyan Bhattacharya, Katpal, ये इन सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो लोग इतना साथ देते हैं, वो ये सब कुछ करते हैं. और पंकज अग्रवाल, तो सभी लोग डॉक्टर्स एंड आल्सो द पार्किंसन डिजीज मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी ने सोसाइटी वालों के लिए जो किया है उससे बहुत लाभ मिला है. और पेंडेमिक के टाइम में भी आप लोगों ने जो एक्टिविटी रखी है, बल्कि ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सके तो बहुत अच्छा. और कौन सा सोशल मीडिया है जिसमें आप नहीं हैं? यू हैव ए वेब पेज, यू गॉट द यूट्यूब, यू गॉट द ट्विटर, यू गॉट द फेस टाइम. सो प्रैक्टिकली एवरी सोशल मीडिया के थ्रू आपकी एक्टिविटीज़ हैं. और अगर पहले टाइप करो पाकिस्तान डिजीज तो यही आता है. Yeah, that's true, doctor. Yes. So over the past 6 decades, you've been mentoring, teaching, inspiring neurologists. What is your advice to them when they approach a patient? I only tell them one thing, that our job is to make the diagnosis and make the patient comfortable. The first important thing is feel the pain of the patient. Put yourself in the shoes of that you give them the treatment that what you would like to receive. Prescribe what is essential. Don't prescribe, and look at the cost also factor. So personally, my advice is really to understand and have a feeling, to have a communication with the patient. It's just not prescribing and listening and making a diagnosis, sending him away. We must really feel for the patient. That I think is what I like to do, and what I've been doing, and what gives me a great satisfaction. That no patient of any illness should go away without some degree of hope, even though we have incurable diseases, and that something can be done for them, and they can find some solace in meeting you also. So I think that is very, very important for me. Yes, and I think that's what every patient has always said whenever they've met you, and whenever they've met so many of Jimmy, Dr. Charu, and so many people. I think that's what's the most important thing, the hope that you give them. So, Doctor, your being awarded the Padma Shri was an honor for all of us whose lives you have touched in different ways. And watching you receive the award at the ceremony was a moment of immense joy and gratitude. So, let's watch that again. So, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसा सर ने बताया, जो जॉय उनको मिला उससे 10 गुना जॉय हम लोगों को मिला, those who have been watching. ये अवार्ड तो मुझे मिला, मैं सोच रहा था क्यों मिला. मिलने का कारण एक ये भी है कि जो समाज के लिए जो किया उसका ये रिकॉग्निशन है. तो ये अवार्ड एक्चुअली पार्किंसन डिजीज़ एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन न्यूरोलॉजी फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उस सबको रिकॉग्नाइज करते हुए मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव बना और मुझे ये अवार्ड मिला. तो इसके लिए खुशी ज़रूर हुई है, इसलिए कि भी एक मेरी सोसाइटी का रिकॉग्निशन है, एक्टिविटीज़ का पार्किंसन डिजीज़ मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी और न्यूरोलॉजी फाउंडेशन का रिकॉग्निशन है. वैसे तो सभी डॉक्टर्स सभी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन वो तो आप कितनी भी साल करते रहो और हर डॉक्टर करता ही है, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं, जो जिस तरह से समाज की सेवा की गई है उसका ये ख़ास रिप्रेजेंटेटिव है. तो इसलिए आई एम ग्रेटफुल दैट द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज दैट सम वर्क हैज़ बीन डन इन दिस फील्ड. So, Doctor, as we come to a conclusion of this conversation where we've learned so much more about you, and
A message from you to the members of your PDMDS family, the people with Parkinson's, Yes. their families, the PDMDS team, and the numerous donors and well-wishers, which are an integral part of our organization, and because their kindness, their generosity, PDMDS is possible. Indeed, I think we have to be very grateful to all the donors, supporters, people who helped us to organize fundraisers. We are very grateful to them. My message to the patients is never give up hope. Lot is happening and lot will happen. And to my extended family of Parkinson's disease and movement disorder society, the only message that I have, continue to work hard and continue to help the patients and their caregivers the way you have been doing, Just expand your services so that in all over India and even overseas, this message is given, and particularly countries with poor resources, the model that Maria has created is replicated. So I'm very, very grateful and very, very happy, that this is being recognized. So I think I'm grateful to the team for whatever they have done so far. Thank you. Thank you so much, Dr. Singhal, Dr. Lal Kaka, and Dr. Barreto for such an insightful and interesting interview. We learned so much more from this interview. Thank you so much once again. Now let's move on to the most exciting and awaited segment of World Parkinson's Day, that is performances by our talented members and their families. This 2-year-long pandemic really taught us that technology can bring people closer even when we are miles apart. हाँ बिल्कुल, इस कठिन समय में स्वस्थ और जुड़े रहने के जोश में PDMDS मेंबर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर ली। पूरे भारतवर्ष में पेंडेमिक के दौरान अलग अलग राज्यों से हमारे साथ पार्किंसंस के मेंबर जुड़ गए। जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सच्चे रूप में नजर आई। देखते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक का फासला एक पलक झपकते ही, या बोल सकते हैं कि एक लैपटॉप का बटन दबाते ही कैसे पूरा होता है हमारे अगले परफॉर्मेंस में। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे कि लगा हम जैसे गाँव। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, किसी किसी में चलने से हुई हमसे कम। और मेरा 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 तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा रंगी, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में साउथ की कट गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी। Together, 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 everyone. Together, together, come on, let's have some fun. Together, we're there for each other every time. Together, together, come on, let's do this right. Here and now, it's time for celebration. I finally figured out, yeah, yeah, that all our dreams have no limitations. That's what it's all about. Come on now. Everyone is special in their own way. We make each other strong. Each other strong. We're not the same, we're different in a good way. Together's where we belong. We're all in this together. Once we know that we are, we're all stars, and we see that we're all in this together. And it shows when we stand hand in hand, make a
वाह, कितना मजा आया। अ ह्यूज अप्लॉज फॉर एवरीवन। पिछले साल घर से निकलकर एक्सरसाइजेस करने के जो मौके थे वो बहुत ही कम थे, तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वही एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स बन गई। व्हाट एन आइडिया सर जी। यस, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ने हमें ये सिखाया कि लॉकडाउन में भी पार्किंसंस के साथ हम कैसे एक्टिव रह सकते हैं, और इसी के कारण हमारे रोजाना के काम और कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंटली करने का हमें होप मिला। जमे रहो, नेवर गिव अप होप, ये मैसेज देने के लिए हमारे विभिन्न सेंटर से बहुत सारे मेंबर्स साथ में आके पेश कर रहे हैं एक डांस परफॉर्मेंस। कसके जूता कसके बेल्ट ठोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। आज पता चला कि जहाँ चाह वहाँ राह का असली मतलब क्या है। Now we don't have any excuse for not exercising. So wherever there is hope, anything is possible. And who knows it better than our members with Parkinson's, who are talented and resilient and face all challenge with a smile on their face. Absolutely. हमारे मेंबर्स के चेहरे पर मुस्कान हमेशा बरकरार रहती है, और यही उनका हौसला बढ़ाने में हमेशा मदद करती है। Our members from various centers have come together to create harmony and spread happiness with a musical performance. देखो राम पापा आज ऐसे गीत गाया करो।
और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम बजे ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम रम पम पम हंसो और हंसाया करो। ओ प्यारी ओ प्यारी रातें जागने में वो मुलाकातें। नहीं कोई गम मुझे नहीं मिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मेरे हमदम शबनम में। और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम मुझे ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। रूप नया है रंग नया है मेरे को तो जाने कहाँ ढंग गया है। किसे है फिक्र किसे क्या पसंद प्यार के रहा मेरे चमन जब हम बन गए है सनम धड़क मेरे घर आया करो। कभी खुशी कभी गम तररम कम हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम कभी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम हंसो और हंसाया करो। वाह क्या बात है. We all were singing along with this melodious performance. लेकिन दीक्षिता, कभी कभी जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है कि लाइफ एक टनल की तरह दिखाई देती है. But hope makes us understand that there is light at the end of every tunnel. और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे यंग ऑनसेट पार्किंसंस ग्रुप के मेंबर्स. हाँ, उनका हुनर और जोश हमें हिम्मत देती है. ये ग्रुप हमेशा ये कहना चाहता है कि वी आर होपफुल फॉर अ क्योर फॉर पार्किंसंस. यंग ऑनसेट ग्रुप मेंबर्स, यंग ऑनसेट पार्किंसंस की ग्रुप मेंबर्स हमारे लिए एक बहुत ही मन को छूने वाला परफॉर्मेंस लेकर आए हैं. आत्मनिर्भर कौन नहीं बनना चाहता. हम पार्किंसंस वॉरियर्स आज भी जॉब करते हैं, घर संभालते हैं, ऑफिस संभालते हैं, सब कुछ अपने बलबूते पर. इस पार्किंसंस ने हमारे एक्साइटमेंट और एक्सप्रेशंस को छीन लिया और छोड़ दिया सिर्फ इमोशंस, जिसे भी खेलते हैं. जब भी हमारी नज़र आपकी नज़रों से मिलती है तब ये मैं वही में तब्दील हो जाता है. यहाँ आपका कोई दोष नहीं साहब. जो दिखता है वह हकीकत है और आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है. किंतु यारो, हमें देखकर पागल, शराबी, मानसिक रुग्ण ऐसे निष्कर्ष तुरंत क्यों? क्योंकि आज भी हम इंसानों की ही श्रेणी में आते हैं, बल्कि अब हम विशेष श्रेणी में पहचाने जाते हैं. वक्त बदला, लोग बदले, देखने का नजरिया बदल गया. हम आज भी अपने बीते दिनों का इंतजार करते हैं. पार्किंसन के सफ़र पर हम तो चल दिए. इस दिल में जो भी है कहने दो, कहने दो, कहने दो. लोगों की नजर चुप चुप के कहे, अब घर में ही हमें रहने दो, रहने दो. ओ कांटों की डगर चुप चुप के ये कहे, अब घर में ही हमें रहने दो, रहने दो. ना 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 ना. क्यों हूँ मैं क्वारंटाइन, क्यों है ये पेन, क्यों नहीं कोई मेरे पास जब बोलूं once a day. हम है पार्किंसन वॉरियर, क्योंकि हर क्षण हर दम
रणभूमि में लड़ते हैं लोगों से, लोगों की नज़रों से, लोगों की तानों से। हमारे वायु पीढ़ी के ग्रुप मेंबर्स कोई कविता लिखते हैं, कोई कहानियाँ लिखते हैं, कोई डांस करते हैं, कोई कोरियोग्राफी करते हैं। बस हमें ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके प्रोत्साहन की, जो हमें एक अपनापन का अनुभव देता है। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, आना कहाँ था ये लो हो गया। छुट्टी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा। That was a powerful message. Thank you all the members of Young Onset Group for that wonderful presentation. हमारे सबके लिए family is the most important thing, and for a person with Parkinson's, their caregivers are the strongest pillars of support. यस, इन 2 सालों में PDMDS को ये मौका मिला कि हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों से और राज्यों से केयरगिवर्स के साथ मिल सकें। ये समझ आया कि इस राह पर चलते समय एक दूसरे के सपोर्ट से सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। तो अगले गाने में केयरगिवर्स और पार्किंसंस मेंबर्स एक दूसरे को ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे लिए तुम काफी हो। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे 2 नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। This performance really showed us that our caregivers bring light, hope, and smiles into the lives of people with Parkinson's. Our work is incomplete unless it reaches the larger community. Our team members, therapists, and community workers tirelessly reach out to rural communities and remote villages to raise awareness and provide our services to them. इसके साथ साथ ओल्ड एज होम्स में एल्डरली पॉपुलेशंस के साथ
PDMDS ने हेल्दी एजिंग कार्यक्रम भी शुरू किया है। मानसिक और शारीरिक एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं और हम आशा करते हैं कि इस हेल्दी एजिंग कार्यक्रम के द्वारा हम इन एल्डरली पॉपुलेशन में कुछ सुधार ला सकें। तो आइए देखते हैं एक वीडियो। मी सध्या सागमाळला राहतो, मी वसंतला राहतो. 4-5 वर्षापासून मी या सेंटरला आहे. मला जरा चालायला त्रास होत होता, बॅलन्स जात होता. इथे आल्यापासून नियमित एक्सरसाइजला आल्यामुळे माझा बॅलन्स जो जात होता तो आता जात नाही आहे. मला जेव्हा आम्हाला माहिती झालं की असं इकडे कार्यक्रम चालू आहे, तेव्हा आम्ही तिथे गेलो. तेव्हा मी मला घाट गुडघा चालू देत नव्हता बिलकुल. त्याच्यामुळे आमचा भरपूर फायदा झाला. म्हणजे गुडघे एकदम ओके झाले. आपल्याला शरीरासाठी घ्यायचा आहे ना अनुभव. मग आले तर थोड्या दिवसात मला अनुभव त्याचा आला. माझे पाय पण दुखायचे, पण माझे पाय पुढे दुखत आले. 1 महीने से एक्सरसाइज करते हमको आराम, बहुत आराम. We are getting relief in that because in body also we are getting relief. Now we can do it. PDMDS is where it is because all of you and our dedicated team members. You all make so much difference in our lives and your resilience gives us the hope and strength to keep going. We are so happy to walk this journey of Parkinson's with you and our team members always go an extra mile to care for you. पेंडेमिक के दौरान पार्किंसंस टीम मेंबर्स ने काम करने के नए नए तरीके अपनाए और अलग अलग राज्यों के थेरेपिस्ट के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. वी आर ऑल वर्किंग पैशनेटली फॉर द कॉज ऑफ पार्किंसंस डिजीज और इसी जज्बे को दिखाने के लिए हमारे PDMDS टीम मेंबर्स एक एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस आपके लिए पेश कर रहे हैं. काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले. हो काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले. ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुन ले कहानियां किताब जोड़ ले. भीगी है जिंदगी तो यारा, बढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा. जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा. इन सब बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखकर हमारे सबके दिल में आशा की एक नई किरण जागी है. In these uncertain times of the pandemic, hope has helped us to overcome fear. Or we witnessed that in all the performances throughout the event. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए कल में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. जी बिल्कुल. We are all in it together and we are hopeful for better tomorrow. हमें बहुत खुशी होती है कि अभी हम हमारे इन पर्सन सेशंस चालू कर रहे हैं और आप सबको हमारे सेंटर्स में मिलने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं.
आज के इवेंट के अभी हम अंत में आ रहे हैं और सेलिब्रेटिंग लाइफ इग्नाइटिंग होप इस थीम को हमेशा हमारे दिमाग में रखते हुए हर सिचुएशन में हम मिलके कहेंगे ऑल इज वेल। Hello, good morning. I'm calling from Parkinson Society. We are happy to inform you that we will be resuming our offline session. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया all is well। अरे भैया all is well। अरे चाचू all is well। अरे भैया all is well। A huge round of applause for all the participants for these wonderful performances. Now, we are coming to the end of the entertainment segment of this event. And now let's move on to the panel discussion with the experts in the field. For the same, now I would like to invite our CEO, Dr. Maria Barreto, to introduce our panelists for the event. And I also request all the panelists to please turn on your camera. Thank you. Thank you, Tejali, and thanks to you and Deepshika for taking us through this beautiful morning. The performance today were incredible, and I thank all our members who in different ways contributed by sending in your videos, helping your family members to record their videos, and those of you who performed at our centers that have recently opened. For us as a team, what really got us through the pandemic was being able to connect with you through our various platforms and the appreciation you expressed at every session. I now request Dr. Singhal to introduce our panelists for the next part of our program. Thank you. Dr. Singhal. Thank you, Maria. Thank you very much indeed. The whole program was really, really superb. Got tears in my eyes, all what they do. We have the very eminent team of doctors and also PDMDS members who are the panelists. We have few questions, and I think you are requested to send in your questions as well. We'll try and as much as possible. So I think we have Dr. I think you'll have to raise your hand, Dr. Petros Vardia, who is eminent Parkinson's disease specialist at the Jaslow Hospital. He was trained at the famous hospital in Toronto. And so I think he has been contributed very significantly and helping the patient with Parkinson's disease. We have also got Charu Sangla, who was also trained in America and who is also attached to the Hinduja Hospital and doing a great work for the patient care.
We have Dr. Jimmy Lalkaka, whom you have seen. Jimmy, where are you? Yes. Hi. Yeah, Hi. Dr. Jimmy Lalkaka. He is attached to the Parsi General Hospital, Beach Candy Hospital, Sapi Hospital, and Bombay Hospital. He is a Parkinson's disease specialist. We have Dr. Pankaj Agarwal. Where are you? Pankaj, are you there? Hi, sir. Pankaj? Hi, sir. Hello, he is there. These are the global hospitals. I think all these specialists are helping us considerably in the care of our patients with Parkinson's disease. And we have Dr. Urvashi Shah, clinical psychologist, a great help, as I said, has been a member with us and guiding us since 2003. We have Dr. Maria Barreto, our CEO, whom you just saw. We have Deepshika Mathur, also in our team, who will be a panelist. And we have the yoga expert, Dr. Rajvi Mehta, with the Iyengar yoga. And I think he also runs the center. And I think we are extremely grateful to her to be a panelist today. So I think I should start asking the question, Jimmy, Dr. Alkaga, tell me one thing, is tremor an essential part in the manifestation of Parkinson's disease? Tremors are a feature, but not an essential feature. मतलब Parkinson's disease हो सकता है even बिना tremors. Tremors can be due to many other causes. It is one of them, but not. It doesn't. It is not 100% characteristic of Parkinson's. और भी कारण होते हैं tremors के? Oh yes. In fact, सबसे ज़्यादा, we have what is known as benign essential tremors, जो हम जब glass पकड़ते हैं, there are people, and it often is hereditary, and लोगों को सालों से वो tremors होता है, and they are not Parkinson's disease. ठीक, डॉक्टर पंकज, ये मुझे पूछना है कि पार्किंसन डिजीज में डोपामिन डेफिशिएंसी होती है, इसके लिए अपन दवाई देते हैं, we give dopamine with another enzyme so that more reaches the brain. कितना डोज दिया जा सकता है महीने में? इसके कोई साइड इफेक्ट भी तो होते होंगे? कैसे आप डिसाइड करते हैं? हाँ, सो आई थिंक ये जो दवाइयाँ हैं जिससे कुछ एंजाइम्स इनहिबिट होती हैं और डोपामिन थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल होता है ब्रेन को, तो ये मेडिसिन भी हम देते हैं, लेकिन इनको बहुत केयरफुली बैलेंस करके देना पड़ता है, क्योंकि अगर उनका डोज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ज़रूरत से, तो एक्स्ट्रा मूवमेंट्स या डांसिंग मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हर केस अलग है, जैसा आप जानते हैं, और इनको बहुत केयरफुली बैलेंस करके दिया जाता है, ये साइड इफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इनका फायदा ये भी है कि ऑफ टाइम जो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग, मतलब कम हो जाता है, और ऑन टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, ये जो मेडिसिन आप कह रहे हैं उनकी वजह से। तो ये बैलेंस करके कितना डोज दे सकते हैं, कितना डोज जा सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और कितना डोज होना चाहिए? हाँ, तो ये हर दवा का अलग है। सो जैसे आप अगर एंटाकेपोन का एक दवा है जो कई बार सिनकेपोन के अंदर मिक्स्ड होती है, तो उसका अलग है, जैसे वो 200 मिलीग्राम की होती है, तो उसको दिन में कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 या 6 बार दे सकते हैं, बट यूजुअली उससे हम कम भी कई बार देते हैं, और पेशेंट किस स्टेज में है और कितने सिम्टम्स हैं इसके ऊपर काफ़ी निर्भर होता है। और इसके अलावा एक दो और दवा हैं जिससे जैसे आई थिंक रेसेजिलिन भी है, और तो उसका भी डोज अलग है, 1 मिलीग्राम है। तो अलग अलग दवाओं का अलग अलग है। थैंक यू पंकज। मुझे डॉक्टर वाडिया से पूछना है कि क्या आपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हो डोज एडजस्ट करने के लिए कि वो जब आपके पास में आवे तो पहला वीडियो लें दवा लेने के पहले, और फिर 1 या 2 घंटे के बाद में फिर वीडियो लें, क्योंकि जब आपके पास में आते हैं जब तो थोड़ा ही समय होता है ना, तो कैसे पता लगेगा कि दवाई कितना काम कर रही है, कितनी देर तक काम कर रही है? सर, आप जो कह रहे हैं ये हम अक्सर क्लिनिक में भी करते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो पेशेंट खुद घर से करके आ सकता है। इसको हम
एल्डोपा चैलेंज टेस्ट करते हैं। बेसिकली पेशेंट को ऑन मेडिकेशन में देखना है और पेशेंट को ऑफ मेडिकेशन में देखना है, क्योंकि अभी पेशेंट जब आएगा तो एक ही स्टेज में आएगा ना, दोनों बार तो देखना हर हर डॉक्टर को मुमकिन नहीं है। तो उसमें फायदा क्या है कि डॉक्टर को भी पता चल जाए कि आपका ऑफ कितना खराब है और आपके ऑन में कितना आप हिल रहे हो, तो इस हिसाब से डोज एडजस्ट करने में फायदा हो सकता है। और पता भी चलता है कि रिस्पॉन्स कितना है आपका दवाइयों का। चारू, कुछ पेशेंट्स जो है पार्किंसन डिजीज के, उनका वजन कम हो जाता है, तो वजन कम हो जाने का कारण क्या है? ये एक्चुअली कारण पार्किंसंस के डिसीज में क्यों होता है कम, ये हम लोग नहीं जानते। बट जो रिजिडिटी होती है पार्किंसंस के बीमारी में, जो स्टिफनेस होता है, उसमें काफ़ी एनर्जी पेशेंट की स्पेंड होती है। और कभी कभी जो एक्सेसिव मूवमेंट होते हैं डोपामिन देने के बाद में, उसे हम लोग डिस्काइनेसियास कहते हैं, तो वो भी उसके कारण भी काफ़ी उनकी एनर्जी यानी जो खार है वो यूज हो जाता है। और ये शायद वजह है उनके वजन कम होने की। और ये जो पार्किंसंस का ये जो सिम्टम है वजन कम होने का, ये बहुत लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन ठीक से इसका क्या वजह है इसकी, ये हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये हमने ज़रूर देखा है कि हम लोग पार्किंसंस डिसीज की सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी के बाद में पेशेंट का वेट काफ़ी बढ़ता है। तो हमें लगता है कि पार्किंसंस के सिम्टम्स के कारण ये वेट लॉस होता है। और ये एक नॉन मोटर सिम्टम है जिससे बहुत बार दोहराया नहीं जाता है, लेकिन पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस इसमें लग जाते हैं वजन कम होने के कारण। राजवी को पूछूंगा, डॉक्टर राजवी मेहता, आपको जो इनको योगा करवाती हैं, आपको डर नहीं लगता कि उनको कुछ गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी? राजवी? यस सर, जब भी इज माय वॉइस ओके? यस सर, जब भी करवाते हैं तो यस इट इज नॉट इजी, देयर इज अ स्ट्रेस, बट ओवर द इयर्स हमें कॉन्फिडेंस है कैसे करना है, हम उनकी मूवमेंट को समझ पा रहे हैं। बट ईच पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम सिर्फ वेरी एक्सपीरियंस टीचर साथ में लेते हैं और धीरे से शुरू करते हैं, फिर उनको बढ़ाते हैं। तो जब हम इन्वर्टेड पोजेस करते हैं तो इवन नॉर्मल पीपल को डर लगता है, बट जो कॉन्फिडेंस है वो 20-25 साल के एक्सपीरियंस के बाद है, और पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस से भी करते हैं लोग, तो उनको फोर्स नहीं करते। नहीं, बहुत फायदा हुआ है योगा से, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। डॉक्टर उर्वशी, आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप बताइए ये पेशेंट्स को पार्किंसन डिजीज को किस तरह से एंजाइटी डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और अपनी मेमोरी वगैरह को इंटैक्ट रख सकते हैं? ये पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आज का थीम जो इतना बढ़िया है कि होप, तो ये होप का थीम अगर हम सोचे तो फिर भी कहना पड़ेगा कि मूड और में एंजाइटी और डिप्रेशन काफी बार होता है पार्किंसंस के साथ। ऐसे माना जाता है कि 40-50% लोगों को कभी ना कभी ये डिप्रेशन और एंजाइटी आती है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इसकी वजह क्या होती है कि एक तो केमिकल्स अपने ब्रेन में, डोपामिन के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन दूसरे भी केमिकल्स है सेरोटोनिन वगैरह, उसकी वजह से भी उनके इम्बैलेंस में ये मूड के चेंजेस आते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग सब समझते हैं कि इस बीमारी के साथ जीना हाँ चैलेंजिंग है, लेकिन जैसे हमने अभी सुना इतना पौना घंटा, विच आई वाज वेरी मूव्ड अबाउट, कि रास्ता है इसमें से निकलने के लिए, कि दैट क्रिएशन ऑफ होप। पर ये भी जानना जरूरी है कि आपको इसको आइडेंटिफाई अच्छी तरह से करना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन सचमुच में है कि एंजाइटी है कि नहीं। क्योंकि कई बार पार्किंसंस में क्या होता है कि अगर वो मास्क लाइक फेस होता है, चेहरे पर भाव नहीं है, आप झुके हुए हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं एक्टिविटी, तो फैमिली को लगता है कि वो डिप्रेस्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई बार जब हम क्लिनिकल इंटरव्यू करते हैं और पेशेंट के साथ बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं वो पेशेंट कहता है कि हमें उत्साह अभी भी है, हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें डांस करना है, हमें बाहर जाना है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। तो वो उनके जो चैलेंजेस है ये टीज आउट करना कि ये पार्किंसंस का एपैथी है या सचमुच में डिप्रेशन है। इसलिए मैं कहूंगी कि अगर आपको कुछ चिन्ह दिखाई दे तो प्लीज आप प्रोफेशनली उनका एक बार इवैल्यूएशन करिए और ये जानकारी लीजिए कि ये सचमुच में डिप्रेशन एंजाइटी है कि नहीं। दूसरी बात है कि ऑफकोर्स ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में दवाइयां हैं, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो दवाइयां हैं,
और उसके साथ एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम कहते हैं वो बहुत अच्छी है काउंसलिंग में। पर सबसे ज्यादा डॉक्टर सिंगल मैं कहूंगी कि ये जो डांस म्यूजिक थेरेपी एक्सरसाइज है, सपोर्ट ग्रुप्स है, केयर गिवर्स का कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत ही मायने रखता है। और हम सब साथ साथ इससे निकल सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। टेक द हेल्प, all can be well and all is well if we start working towards. So that is about mood. Thank you, Urvashi. Thank you very much. Charu, may I request you to take over as the question master now? Ask the questions to the other panelists. Okay. I have to go. I enjoyed the session. Thank you very much. Thank you very much, the panelists. Thank you very much, all the audience, Parkinson's patients, and the Parkinson team members. I have to go for another meeting and therefore kindly excuse me. Thank you very much. Charu, Thank you you, take Dr. over. Yes, sir. Thank you, sir. So I'll be taking over from sir. Dr. Wadia, probably he will have to leave early. तो मैं ये उनको पूछना चाहती हूँ, ये पार्किंसंस का young patient है, वो he's 20 years old and he's saying has symptoms of PD. I have got different opinions from different doctors about my diagnosis. How can I confirm it? And what can I do to stop or control its progression? Dr. Wadia, आप Yeah. Dr. Wadia? Yeah. So firstly, Parkinson's is a clinical diagnosis. Can you hear me? Yes. या पार्किंसन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी पेशेंट को देख के ही पता चलता है, जो स्पेशलिस्ट देख के ही पता चलता है कि ये पार्किंसन है कि नहीं है। अगर उसको कंफर्म करना है तो हमारे पास डैट स्कैन या एफ्लोपा पेट स्कैन 2 टेस्ट है जिसमें से वो कंफर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि डोपामिन की शॉर्टेज है कि नहीं है। तो दोनों तरह से कंफर्म कर सकते हैं, बट मेनली द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल। हर एक पेशेंट को एफ्लोपा पेट या टोडैट की जरूरत नहीं है। और एज फार एज अरेस्टिंग प्रोग्रेस, हर एक आदमी वही सोचता है कि मैं भी मेरे बीमारी रोक दो। अफसोस से ऐसे कोई अभी तक सुराग नहीं मिल रहा है, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है जो पार्किंसन को रोक सकते। देयर आर वेरियस कमर्शियल सेंटर्स ऑफरिंग स्टेम सेल्स, ये कोई रिसर्च नहीं किया है उन्होंने, और जो भी स्टेम सेल रिसर्च है सब अभी तक फेल हुआ है। तो प्लीज ऐसे सेंटर के जंजाल में मत पड़िए। अभी तक कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है जो पार्किंसन को रोक सकती है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे नम्र विनती है कि ऐसे सेंटर में मत फंसिए। थैंक यू। Okay, so this is a question for Dr. Lalkaka. There is a continuous burning under my feet and numbing of toes. Is this a symptom of Parkinson's, and what can be done to treat this? So, Charu, ये normally numbness or burning in the feet normally Parkinson's disease में नहीं होता है। अगर numbness और burning in the feet हो, hello, हाँ, Yes, can you see? I can hear you. Yeah, no, so अगर burning और numbness हो तो फिर देखना चाहिए कि कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं हो, डायबिटीज नहीं हो, विटामिन B12 की कमी नहीं हो। Only thing is कि अगर there are some conditions in which they are, again as you said, non-motor, अगर numbness या pain होता है और सिंड्रोपा गोली से और ऑन पीरियड आने से जो बिल्कुल निकल जाता है, then we can say that it is due to Parkinson. Otherwise, generally, it is not a feature of Parkinson's. Thank you, Dr. Lalkaka. Next question is for Dr. Wadia. कि पार्किंसंस में अभी क्या रिसेंट एडवांसेस हुए हैं और इस बीमारी का कोई क्योर है क्या इन द नियर फ्यूचर? तो पार्किंसंस में वी हैव हैड लॉट्स ऑफ न्यूअर ड्रग्स। अभी सैफेनामाइड जैसी नई दवाई इंडिया में अवेलेबल है। We've got apomorphine pump which is available in India. We've got deep brain stimulation which has been there for many years. So दवाई ट्रीटमेंट सिम्टम कंट्रोल के लिए काफी कुछ है जिससे हम पेशेंट की लाइफ थोड़ी आरामदायक बना सकते हैं। Dr. Charu, what is the second part of the question? Future, is there any cure for Parkinson's disease in the future? So, I think Parkinson is a neurodegenerative disease where the brain cells reduce. Personally, my take is getting a cure seems to be a pipe dream. ये ख्वाब लग रहा है, सचमुच में क्योर होना I think मुश्किल लग रहा है. But we have excellent treatments which are going to make the treatment much better or symptom control much better. So I think cure
I think is something that we are all looking for, but I think शायद मिलेगा नहीं. Okay. So my next question is to Dr. Lal Kaka again. My father has lot of hallucinations, जैसे कि भास होना, especially in the night time. Sometimes he becomes very violent. How do we help him with this? So, hallucinations, Parkinson's disease जब थोड़ा advanced होता है और जब काफी गोलियां दी जाती है, तो hallucinations do happen. And उसमें of course the first thing is कि जो अचानक hallucination हो, so we must first check the temperature, make sure कि कुछ urine infection, chest infection नहीं हो, because any infection can worsen and these hallucinations. Yes. Second thing is to go through the medical list, क्योंकि जो Parkinson's disease की गोलियां है, उनमें काफी गोलियों में ये hallucinations हो सकता है. And in advanced stage 4 या 5 प्रकार की गोलियां आती है, तो उसमें से the doctor has to then decide कि which tablet to reduce in order to help the hallucinations. और अगर hallucinations फिर भी control में नहीं हुआ, so there are certain medicines that we can give in order to minimize the hallucination. But hallucination एक बहुत बड़ा problem है in advanced Parkinson's and causes a lot of distress to the caregivers. Okay, thank you. This is a question for Dr. Pankaj Agarwal. Patient ने पूछा है कि I lose balance while walking and I've had many falls. Is there any medicine to improve the balance in Parkinson's disease? Dr. Agarwal? Oh, hello. Yeah. Sorry, can you repeat the question? Yeah. So, patient ने पूछा है कि I lose balance while walking और बहुत बार मैं गिर चुका हूँ. Is there any medicine to help my balance in Parkinson's disease or prevent the falls in Parkinson's disease? हाँ, तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि कई बार ऐसा सोचा जाता है कि बैलेंस के लिए, और हम पेशेंट्स को कहते भी हैं कि बैलेंस के लिए कोई खास मेडिसिन अलग से नहीं है, लेकिन अगर पार्किंसंस को अच्छे से कंट्रोल किया जाए, जैसे लीवोडोपा या डोपामीन एगोनिस्ट, जो भी बाकी मेडिसिन हम यूज करते हैं, उनका डोज अगर ठीक से किया जाए और जनरली पार्किंसंस को अच्छे से सिम्टम्स कंट्रोल किए जाएं, तो उसके साथ में बैलेंस भी काफी इम्प्रूव हो. लेकिन अलग से बैलेंस के लिए मेडिसिन दुनिया में नहीं है, so that is unfortunate. And but at the time पार्किंसंस कंट्रोल के सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स कंट्रोल करने के बाद बैलेंस इम्प्रूव हो सकता है. Is Dr. Wadia there on the panel or has he left? He's left. So this is a question to Dr. Lal Kaka. मेरे दोनों माँ और पिताजी को Parkinson's disease है. How can I check if I have a chances of getting it? Can I do anything to prevent it in the future? Is there any preventive medicine for Parkinson's patient? Well, preventive तो चारू I don't think ऐसा कुछ है, but एक तो ये Parkinson's disease, old age की बीमारी है. जैसा हम, उम्र बढ़ती है, वैसा, Parkinson's होता है. So it may not necessarily be hereditary, और इसलिए बहुत ज्यादा उस पे अपने को ज्यादा फिक्र करना नहीं चाहिए. But as in most cases, we keep healthy aging, healthy living, regular lifestyle. These things will certainly help to maintain ourselves. This is a question for Dr. Urvashi Shah. As a caregiver, I feel very frustrated and helpless at times looking at the situation of my loved ones. What can I do to be more patient with my loved one who has got Parkinson's? It's a very challenging situation, and I can completely understand when caregivers tell us that when they have to live with a person with Parkinson's who is going through so much, that they also have to remain patient. So one thing I found very often, well, the relatives will tell me that we are doing our best. हम motivate करना चाह रहे हैं, हम उनको inspire करते हैं, हम उनसे करवाते हैं, पर वो सामने से वो cooperate नहीं करते. और जब वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो हमें इतना फ्रस्ट्रेशन लगता है. हम जानते हैं कि इससे करने से वो अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर उनका साथ नहीं मिलता है.
तो मैं हमेशा एक दो बातें कहती हूँ। एक बात तो ये है कि पहले तो हमें ये समझना ही चाहिए कि उनका जो डिस्ट्रेस है, उनको जो तकलीफ हो रही है, वो हम भी महसूस करें। डॉक्टर सिंगल ने कहा था कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग टू द पेशेंट। तो कई बार हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वी हैव टू मैनेज आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। मैं चाहती हूँ कि ये करे और अच्छी तरह से करे क्योंकि वो अच्छा हो जाएगा, पर शायद उस पेशेंट के लिए वो करना बहुत ही मुश्किल है और वो नहीं कर पा रहा है। सो फर्स्ट इज मैनेज योर ओन एक्सपेक्टेशंस कि मैं क्या कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड बात इज यू नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेल्फ। कई बार हमारा बर्नआउट हो जाता है, हम ये चैलेंजेस फेस करते करते, पेशेंट नहीं सुन रहा है, हम चाह रहे हैं कुछ, हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारा बर्नआउट हो जाता है। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं यू नीड टू टेक सम टाइम ऑफ। मैं पेशेंट के रिलेटिव्स को कहती हूँ कि आप अच्छे रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे, तो मेरा पेशेंट अच्छा रहेगा। तो आई नीड यू टू टेक दैट टाइम ऑफ। आप स्ट्रेसफुल जॉब में होते, कोई भी जॉब, इवन एज प्रोफेशनल्स, वी टेक वेकेशंस, वी गो आउट, वी डी स्ट्रेस। You need to take that time off. If you feel it's really you're getting very irritated and angry, see a professional, get that help, do counseling. Come back and spend quality of time, not quantity. पूरा दिन नहीं रहे पेशेंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जो समय रहे वो खुशी से रहे। Of course, you can come and there are detailed counseling sessions we can have with you and help you build the patience. But empathy, taking your time off, understanding the issues, managing your expectations, these are important pointers to bring up patients. डॉक्टर राजवी मेहता, पेशेंट ने ये पूछा है कि योगा के क्या बेनिफिट्स है पार्किंसंस डिसीज में, और कौन से सिम्टम्स पार्किंसंस के इम्प्रूव हो जाएंगे अगर मैं योगा करूँ तो। पहली बात है कि योगा के जो सिम्टम्स है वो प्राइमरली उनका बैलेंस इम्प्रूव हो रहा है, उनकी मूवमेंट इम्प्रूव हो रही है, उनके स्टेप्स बड़े हो रहे हैं तो चल पा रहे हैं, एंड मोबिलिटी, और साथ साथ जो हम इमोशंस की बात कर रहे हैं वो इमोशंस इम्प्रूव हो रहे हैं। तो क्या होता है कि एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, तो जो भी ट्रीटमेंट मिलती है वो एड ऑन करती है। तो दीज आर द सिम्टम्स दैट वी हैव सीन इम्प्रूविंग। हाउएवर, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट यू नीड टू डू इट अंडर अ एक्सपीरियंस टीचर, क्योंकि योगा के नाम पे अगर कुछ गलत कर दो तो फिर नुकसान भी हो सकता है, आप गिर भी सकते हो। जैसे डॉक्टर सिंगल ने पहले पूछा, डर नहीं लगता है? तो yes, I don't get scared, but yes, I'm definitely anxious because each patient is very important and we have to be extremely careful because each की threshold अलग होती है, कुछ ज़्यादा कर ले तो improvement तो definitely होती है। With full confidence I can say to what level and to which patients one cannot really specify, but large number of patients do show symptomatic changes. This is a question for Dr. Pankaj Agarwal. After taking the medicine, I take more than 1 hour to have the effect. I become very stiff in my off period. I cannot move at all during my off period. What can I do to improve my off periods and the effects of the medication? Dr. Pankaj? Yeah, so इसमें आप क्या कर सकते? Yes, I heard the question. So ये जो लेने के बाद ऑफ पीरियड थोड़ा टाइम लगता है जब जाने में, तो आप 2-3 चीजें ट्राई कर सकते हैं। एक है कि मेडिसिन को आप क्रश करके ले सकते हैं पानी के साथ, तो वो थोड़ा जल्दी एक्ट कर सके। और दूसरा ट्रिक है कि आप उसको कोई जैसे सोडा या फिजी ड्रिंक के साथ ले सकते हैं, तो उससे भी वो अब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है और उसका इफेक्ट थोड़ा आधे घंटे के बजाय या 1 घंटे के बजाय थोड़ा जल्दी आ सकता है। तो क्रश कर, कोई पेशेंट चबा लेते हैं, चू कर लेते हैं, पर कभी कभी वो दांत में अटक जाता है, तो उसको क्रश करके थोड़े से सोडा या ऑरेंज ड्रिंक में ले सकते हैं, तो उससे फास्ट इफेक्ट आ सकता है। तो एक या दो ये ट्रिक्स हैं। और इसके अलावा आपका जो मेडिकेशन शेड्यूल है वो आपके डॉक्टर एडजस्ट करेंगे और ऐसी कोई दवाइयाँ एडिशनली दे सकते हैं जिससे आपका ऑफ टाइम थोड़ा और कम हो जाए। तो ये सब बाकी जो मेडिकेशन एडजस्टमेंट है उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, बट 1-2 सिंपल ट्रिक्स आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और this is another question for Dr. Rajvi Mehta. How can a practice of pranayam help in PD? Are there any precautions to be taken? I would be very careful when you're planning to do pranayam, especially if you're going to do Kapalbhati or Bhastrika. I would not advise it because that creates more of disturbance.
So because, but however, there are certain asanas which are very helpful, and through the asanas, your breath, your prana gets regulated. So first is to get stability in the body, and in Parkinson's, there's so much of instability. So we try to help you get the stability, and through that, we lead you to getting a calmer breath along with a calmer mind and a stable body. So please be cautious with the practice of pranayam, and I would not again request that you do not do it any kind of forceful breathing. Okay, thank you. This is a question for Dr. Urvashi Shah. How does one identify early signs of cognitive disturbance in Parkinson's disease, dementia and Parkinson's disease? And as a caregiver, how should I manage these symptoms in Parkinson's disease? Sorry, Charu, I missed the beginning part. It's about the cognitive functions, Cognitive right? functions, and how as a caregiver can manage it, the cognitive dysfunction that happens. Very, very important. बहुत important है कि आप recognize करें कि cognition में problems आ रहे हैं. मैं आपको just उदाहरण दूंगी. अगर आप देख रहे हैं कि आपके patient जो हैं, पहले से जब आप उनको compare करते हैं जो वो पहले थे, अगर आपको लग रहा है जैसे मैं अगर attention के बारे में सोचूं, वो brain function के बारे में, अगर वो distracted हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्रता से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा समय तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं. फिर अगर हम मेमोरी पर जाएं और अगर आप देखें कि अभी वो भूल रहे हैं, आपने कुछ बात की, वो कहेंगे कि मुझे याद नहीं, आपने नहीं बताया, क्या खाया था, कौन आया था, कुछ इवेंट्स के बारे में वो भूल रहे हैं. तो ये भुलक्कड़ होते जा रहे हैं. दूसरी बात होती है कि हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई बार वो कहते हैं कि हमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना है. कभी कभार कैसे होता है कि वो रिमोट, टीवी का रिमोट कहते हैं कि ये कैसे चलता है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें. रीडिंग होता है, जो पहले की वो एक्टिविटीज कर पा रहे थे आसानी से अब नहीं कर पा रहे हैं. तो ये जब मेंटल फंक्शंस जो हैं, ब्रेन फंक्शंस आप देखते हैं कि कुछ कम हो गए हैं, पहले जो बातें आसानी से करते थे अब उनको दिक्कत हो रही है, तो हमें आइडिया मिलता है कि अब ये कॉग्निटिव फंक्शंस आर गोइंग डाउन. Now you need an evaluation. You must come to a professional. हम evaluate करते हैं, हम देखते हैं कौन सा फंक्शन कम हुआ है, कौन सा इंटैक्ट है. ये सचमुच में डिमेंशिया मीनिंग मल्टीपल फंक्शंस हैव गॉन डाउन, और कितना कम हुआ है. तो वो जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको इसके लिए थेरेपी क्या होगी, कॉग्निटिव थेरेपी क्या होगी. बट एज अ फैमिली मेंबर बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं. मेमोरी के लिए फॉर एग्जाम्पल हम उसको कहते हैं कॉम्पनसेटरी स्ट्रैटेजीज. हम सिंपल बात है कि पार्किंसंस में हम देखते हैं कि जब आप भूलते हैं, अगर आपको हिंट दिया जाए, क्यूइंग दिया जाए, क्यू दिया जाए, तो वापस वो इंफॉर्मेशन आ जाता है. तो अगर हम छोटे छोटे हिंट्स दे, हम एक टू डू लिस्ट बनाएं, एक व्हाइट बोर्ड घर पर रखें, डायरी राइटिंग सिखाएं, ये छोटी छोटी काफी स्ट्रैटेजीज है जिसे हम कॉम्पनसेटरी स्ट्रैटेजीज कहते हैं. ओरिएंटेशन के लिए कैसे चेक करना कौन सा दिन है, कौन सा क्या है. तो ये जब हम सिखाते हैं आपको, तो बहुत ही आसानी से घर में आप ये कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू नॉट चैलेंज योर पेशेंट. जब वो भूलता है तो आप कहते हो, आपको लगता है अरे वो भूल रहा है, मैं पूछूं उससे, अच्छा मुझे बताओ क्या खाया था आज आपने, कल कौन आया था. यू कीप आस्किंग बिकॉज यू आर वरिड. प्लीज पूछो मत. डू नॉट एलिसिट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. अगर आपको लगे कि वो भूल रहा है कि कौन सा महीना है, क्या है, आप बातों बातों में कह दो कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है, आम का सीजन आ गया है, अप्रैल चल रहा है. आपने बता दिया उनको कि अप्रैल का महीना है, उनको याद नहीं आ रहा है. सो यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, नेवर एलिसिट इट. उनको कम नहीं दिखाना है. प्लान योर एक्टिविटीज विद दैट अंडरस्टैंडिंग कि वो स्लो करेंगे तो उनको कोई भी एक्टिविटी अटेंशन नहीं है तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना है. जो भी एक्टिविटी के उनके कैपेसिटी के अंदर है, so that they feel successful. Don't let them experience failure. काफी सारी ऐसी एडवाइस है. Please come to us professionally. We will guide you. That's a very good answer. Now the next question is for Dr. Pankaj Agarwal. Very important. What is DBS? Who will benefit with this surgery in Parkinson's disease? Is there any age criteria for it? And how can one decide whether DBS is going to be helpful to her or him? So it's a long question, but I think a lot of audience would want to know it. Pankaj? Dr. Agarwal? Could you please unmute?
It's about DBS. Hello. Hello. Yes. Yeah. Hi. Sorry. Did you ask me something? Yeah. So the question is that what is DBS, the surgery in Parkinson's disease? Which patient will benefit from this particular surgery? Is there any age criteria for this surgery? And how can I decide whether the surgery is a correct option for me? Yeah, so let me answer these 3-4 questions in short. So deep brain stimulation या DBS सर्जरी एक ब्रेन की सर्जरी है जिसमें एडवांस पार्किंसन पेशेंट्स जिनको कई साल से पार्किंसन है उनमें किया जाता है। सब पेशेंट्स के लिए नहीं होता है। कई सालों बाद जब मेडिसिन का इफेक्ट बहुत कम टाइम तक रहता है या फिर मेडिसिन लेने के बाद बहुत ज्यादा डिस्काइनेसिया या डांसिंग मूवमेंट्स जब बढ़ जाते हैं और गोलियां एडजस्ट करने के बावजूद भी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब सर्जरी का सवाल उठता है। इस सर्जरी पेसमेकर लगाते हैं, जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है ऐसे ही ये ब्रेन में लगाते हैं और ये लगाने से काफी फर्क पड़ता है ये पेशेंट्स के ऑफ टाइम कम होने में और डिस्काइनेसिया जो डांसिंग मूवमेंट्स जो होते हैं जिससे बहुत तकलीफ होती है गोली खाने के बाद, वो मूवमेंट्स कम होने लिए। कई बार जो पेशेंट्स को बहुत सीवियर ट्रेमर होता है, जैसे उनका हाथ मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, उसमें भी ये काफी इफेक्टिव है। इस सर्जरी के लिए सब पेशेंट में ये सर्जरी नहीं की जाती है। जिन सिलेक्टेड पेशेंट्स में जिनको काफी जरूरत है इसकी और इसका सिर्फ आपके डॉक्टर कर सकते हैं, उन पेशेंट्स में ये किया जा सकता है। तो आई थिंक वाज देयर एनी अदर पॉइंट? I can't hear you. The second question that has come. No, can you hear me now? Yes, yes. Yeah. So the second question that is asked by the patient is that if I do not want to do the DBS or if I am not the candidate for DBS surgery, अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ या अगर मैं DBS के लिए ideal candidate नहीं हूँ, तो मेरे treatment options क्या है? तो अगर आप डीबीएस नहीं करवाना चाहते हैं किसी कारण या आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, मतलब आपके डॉक्टर ने डिसाइड किया है कि 1-2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको ये सर्जरी का फायदा इतना ना हो, ओके, तो फिर भी ऑप्शंस हैं। तो एक एपोमॉर्फिन इन्फ्यूजन है, वो एक ऑप्शन है, पर इसका भी सिलेक्शन काफी ध्यान से करना पड़ता है कि किसको फायदा होगा, कितने तक होगा, और उसका ये एक ऑप्शन है। कई मेडिसिन भी न्यू आई हैं जिनकी वजह से ऑफ टाइम कम हो सकता है और ये भी मतलब ऐड किया जा सकता है आपके मेडिसिन के लिए। तो 2-3 ऑप्शंस इसके अलावा भी हैं। फ्यूचर में एक इंडिया में अभी ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में एक ऑप्शन इंडिया में आ सकता है थोड़े सालों में, इसको लीवोडोपा कार्बिडोपा इंटेस्टिनल जेल बोलते हैं। तो इसमें एक जैसे एक डिवाइस लगाते हैं और उससे डोपामीन जो है वो अब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो डीबीएस के अलावा भी ऑप्शन हैं, पर इनको काफी सिलेक्शन काफी ध्यान से सिलेक्ट किया जाता है। तो ये आपके डॉक्टर सकते हैं कि आपके लिए ऑप्शन कौन सा सही है। मेरा अगला सवाल, थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल, मेरा अगला सवाल डॉक्टर लाल काका को है। What is the natural way of increasing dopamine in the brain or improving dopamine in the brain? Naturally हम लोग dopamine कैसे बढ़ा सकते हैं? I think वो थोड़ा मुश्किल का मामला है। To increase dopamine, there are supposed to be certain foodstuffs which are supposed to be rich in dopamine. जैसा ये broad beans बोलते हैं, I don't know what they are called, Charu, if you know, you can just कुछ ऐसा हो तो I don't know the actual common name, but so that is of course certain foodstuffs. Then of course there are certain mucunia pruriens, this Ayurvedic preparations
they are the ones which do contain dopamine. So there are some things where you can, try to naturally increase dopamine. Okay. And there is another thing, can we take Ayurveda or homeopathy medications with allopathy? Are there any complications? And a little bit about the stem cell therapy that everyone wants to know. Dr. Lal Kaka? Yeah, Charu, I think the only Ayurvedic things are, there is one Zandopa and there is some Muconia pruriens preparations. Wo Ayurvedic mein hai, and they, do help. Homeopathy mein, I am not sure whether there is anything in homeopathy or not. And, as you have mentioned and as Pankaj has mentioned, as far as stem cells are concerned, and Petrus has mentioned, I think stem cells may be something for the future. Lot of research is going on, but at the present moment, stem cells are not an option. और अभी जो लोग कर रहे हैं, they are not doing it properly or scientifically. And so at this present point of time, I would not recommend stem cells to any patient with Parkinson's. This is a question for Dr. Urvashi Shah. How to deal with complete loss of motivation in Parkinson's disease? My wife doesn't want to take interest in any activities these days. So as we discussed earlier also, apathy, which is part of Parkinson's disease. Apathy मतलब अब किसी बात में इंटरेस्ट नहीं रहना और एक रुचि नहीं रहनी, तो ये डिप्रेशन से थोड़ा अलग होता है और वो इंटरेस्ट कम हो जाता है हर बात में. तो उनको कितना भी हम बात करके मोटिवेट करना चाहें तो वो मोटिवेशन अंदर से नहीं आता है. तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर एक जैसे टाइम टेबल हो ना, स्ट्रक्चर हो दिन का, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर एक व्हाइट बोर्ड पर हम सुबह से शाम तक लेकर, एक तो एडीएल एक्टिविटीज होती है सेल्फ केयर की, पर उसके साथ साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज कि अभी समय है कि आपको कपड़े घड़ी करना है, आपको यहाँ थोड़ा ये पोंछ लेना है, छोटी छोटी एक्टिविटीज पर टाइम टेबल की तरह लिखा हो. तो उसमें क्या है कि हम सिर्फ इतना कहते हैं अपने जैसे हस्बैंड वाइफ किसी को है कि मैं जानती हूँ कि आपको इच्छा नहीं हो रही है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरी मदद के लिए, हेल्प मी आउट, परिवार के लिए, जस्ट डू दीज थिंग्स. वो टाइम टेबल के हिसाब से इतना हो गया, वेरी गुड, अब रेस्ट कीजिए, आप इतना कीजिए. और जो भी वो काम करते हैं ना, उसका बहुत सारी प्रशंसा करनी, एक्नॉलेजमेंट, ओ यू रियली हेल्प मी, यू रियली कंट्रीब्यूटेड टू दिस. सो देयर मे नॉट बी एन इंटरनल मोटिवेशन फॉर द पर्सन टू डू, बट व्हेन वी पुट देम थ्रू अ स्ट्रक्चर व्हिच इज रेपिटेटिव, रोज वही रूटीन करते हैं और हर बार उनको थैंक यू, ग्रेटफुल, आपने मदद की, आपने अच्छा करा, तो कहाँ ना कहाँ वो पार्टिसिपेशन जब शुरू हो जाता है, तो it is not an overt by themselves motivation, but we are at least getting them to be participative and productive. मतलब वो कुछ तो contribute कर रहे हैं और active रह रहे हैं. So this is one way I use timetables and structure to help people who are not motivated themselves. Thank you. Dr. Agarwal, there is a patch therapy in Parkinson's. Can you tell us a little bit more about it? हाँ, yes, sure. So ये जो पैच आपने कहा, तो इसमें एक मेडिसिन है डोपामीन एगोनिस्ट जिसको रोटिगोटिन बोलते हैं, और ये मेडिसिन चिपका, मतलब ये पैच ऐसे चिपका देते हैं बॉडी में, और जैसे थोड़ी और भी मेडिसिन हैं जो वो पैच है उसको ऐसे चिपका दिया स्किन पे, तो 24 घंटे वो चलता है. लेकिन ये इतना अवेलेबल अभी नहीं है इंडिया में, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी नॉन अवेलेबिलिटी से बहुत कोई ऐसे प्रॉब्लम है और वो मस्ट है लेने के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ओरल मेडिसिन और बाकी. बट कई पेशेंट्स भी हमें पूछते हैं इस मेडिसिन के बारे में, इससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ है पेशेंट्स को हमें, लेकिन शायद ये इंडिया में भी आए. डॉक्टर चारू, आपको मालूम होगा ये कब आने वाला है, मे बी, या नहीं? ये हम लोग ने बहुत कोशिश की थी यहाँ इंडिया में लाने की, लेकिन वो ओरिजिनल जो कंपनी है उनके कोई एप्रीहेंशंस थे, इसीलिए वो हम लोग नहीं. बट ये पैच अवेलेबल है, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ले रहे हैं. दे आर प्रोक्यूरिंग इट फ्रॉम द वेरियस केमिस्ट एंड दे आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम
from overseas. So it is a little expensive and difficult, and it's not great. We have pramipexole, we have propranolol easily available in India. ये मेरा अगला सवाल है डॉक्टर लालकाका के लिए. How do you treat constipation in Parkinson's disease and drooling, that means जो थूक लाल गिरती है उसे कैसे ट्रीट किया जाता है? Sorry, what was the second one? Constipation and drooling. How do we treat drooling? Drooling in yeah. So constipation एक बहुत बड़ा problem है Parkinson's में. It is one of the major problems at all stages. वो Parkinson disease की वजह से भी हो सकता है और Parkinson's disease की गोलियों की वजह से भी हो सकता है. I think the most important thing is diet. We have to eat well, ensure adequate fluids, and there are, eat lots of vegetables, eat lots of fruits, and, there are certain medications also, laxatives, etc., which if we give properly will certainly help. Exercising regularly, having a good lifestyle, that will also help. And sometimes there are certain medicines which are जो सबसे ज्यादा constipation देते हैं, जैसा कि Pacitane हो. तो अगर हो सकता है तो ये Pacitane को कम करना चाहिए या omit करना चाहिए. And as far as drooling is concerned, drooling is a feature of Parkinson's क्योंकि उन लोगों को they are not able to swallow very well. So वो मुंह में ही रहता है and then it tends to come out. So I think again there aren't too many good. One is of course a good control of Parkinson's, and then some people ये जो atropine drops है, they can apply, they can put it in the mouth in order to dry the mouth a little bit. And of course in very 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 severe cases कभी-कभी वो Botox injections देते हैं into the salivary glands to reduce it. Okay, thank you. I think we will conclude the question answer session here now. I can request the panelists to answer the question answers which are there in the chat box as well as in the question answer sessions if they can. Dr. Lalkaka, Dr. Rajvi, Dr. Urvashi Shah, and Dr. Agarwal, thank you for answering all these questions well, and I'll hand over to Tejali. Thank you, Charu. Thank you very much. Thank you, Charu. This is very well done. Thank you. So on behalf of everyone, and I'd like to thank you all for being here. Dr. Singhal, he's had to leave, and I thank Charu for taking us through this very informative session. Thank you, Dr. Urvashi Shah, Dr. Jimmy, Dr. Pankaj Agarwal, Dr. Rajvi Mehta, and Dr. Petras Wadia for today, for sharing this information, and for always being available to the Parkinson's Disease and Movement Disorder Society. I don't think there's ever been a time when you have said no to me for anything that I've ever requested, and I hope that's going to continue in the future as well. Thank you, Tejali, for taking us through the whole program. And thank you to all of you participating, people with Parkinson's, their families, our donors, our well-wishers. It's been a lovely day, and we really celebrate your lives. And we thank God for bringing you all into our lives. We look forward to being there for you, wherever and whenever you need us. Have a lovely day. Thank you. Thank you, Maria. That was a lovely program. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very Along much. with the patients, we also enjoyed it. Thoroughly enjoyed it. Thank you so much, Dr. Pareto, all the expert panelists, and everyone who joined this program in such a great number. Thank you so much for joining with us today. And if you are new to PDMDS, I'm just sharing our contact details slides. So please note down our contact details. We do conduct weekly online sessions for people with Parkinson's and also for caregivers. These sessions are conducted in group therapy format. All the services are provided free of charge.
We have, like Dr. Maria Barreto mentioned in the interview, that we have more than 60 centers all across in 13 states. But now with the pandemic, in the online sessions, you can join us from anywhere in India. So please do get in touch with us. We will be continuing with our online services as well, even when we are starting and resuming our offline sessions. So these are our contact details. You can contact us via phone, or you can email us on pdmds.india@gmail.com. This program will also be available to watch later on our YouTube channel, Parkinson's NGO. You can also visit our website, parkinsonsocietyindia.com, and also follow us on Facebook, Instagram, and Twitter for more updates. Thank you so much, everyone, and have a lovely day.